A very warm welcome to the all the audience of Next Officers. And as I promise you that we always bring about new veterans who can share their experiences for like motivating the youngsters who can become good leaders for the country. And your experiences can provide valuable lessons to the young professionals and new young professionals who are working hard in the country for its upliftment. So in the legacy, we are here with Brigadier Neelesh Bhanot, who is one of the most decorated soldier in the Indian Army. Now veteran, he is spending his life in the NCR, motivating the youngsters, and I heartily welcome you here, sir. Thank you so much for your presence. I'll tell you more about you after your speech. Jai Hind, everyone. Thank you, Arpit, for giving me an opportunity to talk to you and your listeners and audience. Uh, Thank you very much. So talking about Brigadier Bhanot, भनोट सर के जैसे हम फोटोग्राफ देखते हैं, ही इज लेडन विद द मेडल्स. जो उनके बैचेस हैं, जो उनके मेडल्स हैं, दे आर सो मच मोटिवेटिंग फॉर द यंगस्टर. सर joined as a very young soldier in the Indian Army and he rose to the level of a brigadier who commanded the entire brigade. आपके जो लीडरशिप लेसन्स हैं वो आज हम इस पॉडकास्ट में जानने की कोशिश करेंगे सर. योर एक्सपीरियंसेस इन द स्पेशल फोर्सेस. अदर देन दैट सर के बारे में बहुत एक स्पेशल फैक्ट है कि वो अपने पहले ही ऑपरेशन में कैजुअलिटी हो गए थे. तो ही हैज़ ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस टू शेयर अबाउट इट. एंड आई थिंक यंगस्टर्स को जानना चाहिए. इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द यंगस्टर्स टू नो कि हमारे सोल्जर्स बॉर्डर पे बैठ के किस तरीके की सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं. मैनी टाइम्स वी क्रेप अबाउट ए लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर लाइफ. यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में बैठ के या प्लेन्स में बैठ के वी क्रेप के लाइफ में ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, बट वी शुड नो कि हमारे सोल्जर्स किस तरीके से वहां पर डील करते हैं. और आप सबके जो एक्सपीरियंसेस वहां पर हैं, दे कैन बी हाईली बेनिफिशियल फॉर द पॉजिटिव mindset and the overall motivation of the youngsters. So, without a further ado, I would like to know about yourself from you. It's very difficult to describe your entire career. एक brigadier बनना आसान बात नहीं होती है. एक brigade को command करना, it's a very big thing. But how do you define yourself and your journey till date, sir? Oh, my journey has been very, very simple. Uh, I grew up in the army only. I'm an army kid. My father was in the army. He was in the Gurkhas. I grew up in the army, uh, playing in the cantonments, the same obstacle courses everywhere, and firing ranges. May we would collect those bullet leads, and use it in our catapults. गुलेल में use करते थे हम वो सिक्का collect कर करके, and we grew up like that in various cantonments. So joining the army never gave it a thought as such. आर्मी में भी जैसे आप बचपन में एज अ बॉय ग्रोइंग अप आप क्या क्या गेम्स खेलते हो. आई से दिस वेरी ऑफन. इट वाज लाइक एक्सटेंशन ऑफ माय चाइल्डहुड इनटू टिल द टाइम आई रिटायर्ड. यू आर प्लेइंग द सेम गेम्स. पकड़न पकड़ाई खेल रहे हो, छुपन छुपाई खेल रहे हो, चोर पुलिस. So it's the same thing which you do after growing up, and you do it in a much more enjoyable manner. You have all the means available to you. सारे साधन है आपके पास. आपके पास मैन पावर है, आपके पास इक्विपमेंट है, आपके पास वेपन्स हैं. सो आप बड़े मजे से ये कर सकते हो. और यही करते करते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज आई बिकम अ ब्रिगेडियर, एंड दैट्स हाउ द स्टोरी गोज. आई रियली लाइक योर मॉडेस्टी सर. एंड जैसे आपने बचपन में जो बात बताई कि गोलियां मैं इकट्ठे करके एंड आई यूज टू लाइक फायर देम इन दी माय कैटापुल्ट, आई कैन वेरी वेल कोरिलेट विद इट. सिंस आई हैव स्टडीड फ्रॉम सैनिक स्कूल कुंजपुरा, तो हमारे पास भी एक फायरिंग रेंज होती थी और हर थर्सडे को एनसीसी के बच्चे वहां पे दे यूज टू डू दैट फायरिंग थिंग. जो हमारे उस्ताद वगैरह होते थे फायरिंग कराते थे, तो उसके बाद जब छोटे छोटे हम भी 6 7 8 क्लास में होते थे तो पहुंच जाते थे उनको इकट्ठा करना एंड जस्ट टू फाइंड आउट दोस शेल्स. और वही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती थी, वो कलेक्ट करके कलेक्शन क्रिएट करना एंड गेटिंग इंस्पायर्ड. दे मेक द परफेक्ट, एकदम परफेक्ट उसकी वो गुलेल की बुलेट्स बनती हैं उससे. Exactly, sir. I can very well correlate. So, can you describe your Indian Army experience very briefly, right from getting commissioned into the forces, और उसके बाद कैसे कैसे आप प्रोग्रेस करके ब्रिगेडियर बने and how you like superannuated. So, very briefly your journey in the Indian Army. Okay, I'll tell you. Okay, I got commissioned in 23 Punjab, Longewala. That famous Battle of Longewala, border movie. Huh? Exactly. So, uh, so that's where I got commissioned. Illustrious unit.
very, very decorated, with a battle honor of Longewala. So I was very proud to join there. I joined them while the unit was doing Oprakshak in Punjab, and after that, the unit moved to Ranikhet. Anyway, in brief, I'll tell you. 4 years I stayed in 23 Punjab, and thereafter I had volunteered earlier for SF, and after 4 years my probation came, and then I went to SF for probation, got selected, and then continued in the special forces. Beach May, I went for one or two outings. I went as instructor to IMA, and I've done another instructor at Army War College, where you teach junior level officers with about 5 to 10 years of service. Yeah. So other than that, I've done since 91 till date, इंडियन आर्मी के जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं, जहां भी हुए हैं, I'm proud to say that I've been involved in all of them, right from Oprakshak in Punjab, Oprakshak in JNK, Op Rhino in Assam, uh, Op Meghdut in Siachen, uh, Op Hifazat in Manipur, and of course, the icing on the cake is Op Vijay in Kargil. So I was lucky enough to see combat, and all the only regret which I have got, is recently I was watching on the TV one of the thing on the 26/11 attacks, and that time I was a commanding officer. I was commanding a unit specializing in high altitude warfare. So there was that itch. Why wasn't I there? Or why I can't contribute in that operation? Of course, people did a wonderful job there. Not that I would have done it better. But that एक वो कीड़ा है कि जहाँ जहाँ थोड़ी आग लगी है, जहाँ पंगा है, तो उसमें थोड़ा सा, yeah. So that kind of, it holds a attraction for me. So yes, thankfully, Army gave me this opportunity to be involved in also so many operations. Uh, that's why I'm saying I've had a very, very good life in the Army. Fantastic life. I don't think there'll be very many officers who would have had a life as good as me. Touch wood. Hats off, sir. Only the forces can give so much of experiences and exposure, and to define you like in a crux, what you said, it's jahan problem, wahan Brigadier Neelesh Bhanot, but in a positive sense to resolve that problem, not the creator of the problem. So there are two sides of the every aspect. Actually, मैं आपको frankly बताऊं, मैं it was not as if I went there to solve the problem as such, but yeah, I have been there. I take life one day at a time, one step at a time. So you land in an operational area, you look around, आप assess करते हो, and then you plan your operation, hoping to get success in each. So yeah, so I've been at it right Great. from right from my first day in the army. So you told about so many operations, but Operation Meghdoot is quite close to me. I don't know for what reason. जब भी मैं इसके बारे में सुनता हूँ, पढ़ता हूँ. One of my friend is posted in Leh. In fact, he's in Karakoram actually. So I was discussing up with him about Operation Meghdoot. So I would like to know more about it from you after some time. But to begin with, I would like to get your experience in the Indian Army. So there's a very amazing fact about you कि जब जिस दिन आप कमीशन होके अपने ज्वाइनिंग प्लेस पर पहुंचे थे, सो यू हैड अ प्रैंक. जो आपके कमांडिंग ऑफिसर थे, ही वाज डूइंग अ प्रैंक ऑन यू. सो आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट एंड हाउ सच लाइट मोमेंट्स इन लाइफ दे हेल्प इन डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स and they help in relieving stress. So a bit Yeah. of that from Okay. Firstly, it was not, the prank is not played by the commanding officer. The prank was played by my company commander. okay. So in the army, you have a system of buddy. Yeah, every officer is allocated a buddy, wherein the buddy helps the officer, because an officer's day from morning till evening is chock a block full. So the buddy helps him with the administrative things. So especially when you're new to the unit, you don't know anything. It's when you go new to a school, आपको पता है कि आप क्लास में जा रहे हैं, वहाँ टीचर है, वहाँ there'll be 40-45 other students, and I have to make friends with them.
But when you're joining a unit, you don't know anything. Yeah? Of course, you've seen your father's unit, but यहाँ पर क्या होने वाला है कुछ नहीं. Anyway, so I was allocated. So this buddy of mine, वो मेरे को पहले मोमेंट से ही ना एक्स्ट्रा स्मार्ट लगे. मैं बोलूं कुछ, वो करे कुछ और. बोलूं ये वाली यूनिफॉर्म लगानी है, वो बोले वो लगा कुछ और दे. ही मेड मी स्टे इन अ टेंट. वहाँ वहां मैंने बोला यहाँ पानी कहाँ मिलेगा, पानी तो साहब खुद ही लाना पड़ता है. देन आई वेंट समवेयर, कहाँ मिलेगा. सम कैंप के बाहर कहीं से पानी ला ला रहा हूँ मैं, कहीं बहुत बहुत उसने तंग किए. सो लेटर ऑन आई केम टू नो. धीरे धीरे एक दो दिन जब हो गए तब पता लगा कि ये तो वन डे आई वॉज इन साइड द टेंट एंड ही वॉज पासिंग बाय बाहर से. And I saw, when he's passing, people suddenly becoming, wishing him, Jain Saab, Jain. Then I realized kuch dal mein kala hai. So then I went to the office area and then I happened to see his photo and then I realized, oh, this is Major Datta. Amazing. So, yeah, so I would say it's kind of tradition that whenever officer joins any unit, so you do something, something funny, you play a prank on him or something, uh, so that uh, the ice is broken. So obviously, जो तुम्हारे ऊपर ऐसे तुम्हारे साथ ऐसे मजाक कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, so you do feel good about it. And so that ice was broken that way. And Colonel Datta now, he's a decorated Sena Medal in the Valley, and he was my company commander for quite some time, and he taught me a lot of things. He's retired and he's running ultra marathons now. A fantastic man, and it creates that bond of friendship. So I always will have a special bond of friendship with that one person who did this. फिर हमने भी किया है ऐसे लोगों के ऊपर. So I think कभी किसी ऑफिसर का there's आई a कार्ड चुरा big लिया. takeaway from this incident. So what we generally suppose from the army is that there is a very strict hierarchy कि if someone is lieutenant and the other guy is major तो बहुत ज़्यादा एक difference रहता है वो discipline का, honor का, respect का. But at moments in a professional life we have to like create some lighter moments. These are meant कि हमारी team थोड़ी close आए. It's a kind of group dynamics. टीम को साथ लाने का तरीका एंड वी कैन से इट्स अ गुड लीडरशिप लेसन कि अगर आपको किसी को लीड करना है देन यू हैव टू ऑफर अ हैंड फर्स्ट. पहले एक हैंडशेक का अपनी साइड से हाथ ऑफर करना पड़ेगा एंड एक अच्छा सा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा सो दैट वी कैन गो हेड इन अ वेरी कोहेसिव मैनर. So it was a really Absolutely. nice incident. Nice to hear from you. Sir, I would now like to know about a very serious topic. I know it's not a मजाक नहीं है to have bullets on your chest and you had that. So you became a casualty. बहुत ही मतलब एक ऑनर की भी बात है बट हाँ एक एक काइंड ऑफ एज अ पर्सन अगर आप किसी को देखें आपकी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा उनको झटका भी लगता है कि अगर किसी को अपने बच्चे को या अपने बंदे को इस तरीके से कुछ हो जाए तो. सो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू द ऑपरेशन. व्हाट वाज द ऑपरेशन एंड कैसा लगता है कि जब बॉडी पे आके बुलेट्स लगती हैं हाउ डज इट फील कैन यू डिस्क्राइब इन दोज लाइक Yeah, I माइन्यूटली. can. यू कैन डिस्क्राइब Yes, yes, माइंडली yes. आई थिंक यंगस्टर्स नीड टू नो दिस कि किस तरीके से अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के लिए वी हैव टू लाइक क्रॉस द बैरियर कि इतना नहीं है कि जितना मुझे काम दे दिया सिर्फ मुझे उतना करना है तो उस बार को क्रॉस करना पड़ेगा एंड यू हैव टू गिव योर 100%. सो अ बिट अबाउट द ऑपरेशन कि वो ऑपरेशन कैसा था आपका क्या रोल था एंड देन अबाउट कि सर वो कैजुअलिटी होते वक्त आपको कैसा फील हुआ कितना टाइम आपको रिकवर होने में लगा किस तरीके से आर्मी ने और आपके जो बडीज थे आपकी जो फैमिली थी उन्होंने कैसे आपको सपोर्ट किया टू ओवरकम दैट सिचुएशन. ओके, हुआ ये कि हम हमारी यूनिट, वी रीच्ड वैली एंड वी वर टू रिलीव अनदर यूनिट. तो कैसे होता है कि हर एक यूनिट को एक एरिया दे दिया जाता है. And within that area, the various there are those each company of the unit is given a particular area. Okay, so I was to go and take over that area from another unit. Uh, so I took my company, and there was this officer. He was sitting there already with his company. Two Jackrif का officer था वो. He was my course mate only. So we landed there. 1 or 2 days we took to settle down, and then they were moving out of the area after 2.5 years. A fantastic unit. They did a fantastic job.
So we were always, taking, asking them, क्या क्या होता है, कैसे होता है, and they had a lot of experience and the kind of operations they had done. So we were in awe. हम तो अभी पीस स्टेशन से आए थे, ऑपरेशंस नहीं देखे हमने वहाँ. So and because he was course mates are like brothers, blood brothers. So मैंने बोला सोही, कोई ऑपरेशन जाएगा तो मेरे को ही बताना, कह रहा. So I had just said this. It was around 6 o'clock in the evening. It was 11th of April, 95. Yeah. So 11th of April 95, around 6 o'clock in the evening, अंधेरा हो चुका था वहां. एंड बर्फ भी थी हल्की हल्की. सो वहां पर खबर आई कि साहब, 7 मिलिटेंट्स हैं. कहाँ है वो? सामने वाले गांव, हार्डली अ किलोमीटर, वी कैन सी इट फ्रॉम द पोस्ट. बोला ओके फाइन. सो ही क्विकली गॉट द पार्टीज, ब्रीफ देम कि तुम यहाँ लगोगे, तुम यहाँ लगोगे, तुम यहाँ लगोगे. ठीक है. सो वी ऑल मूव्ड एंड it was on outskirts of the village. My party was moving, and suddenly from the left side there was somebody said something, shouted something, and there was fire. And distance would have been about 15 मीटर, 10 से 15 मीटर होगा, वेरी वेरी क्लोज. और वो, इट वॉज ओपन फील्ड. सो अब ऐसे में कोई बहादुरी वगैरह कुछ नहीं होती है. यू सिंपली हिट द ग्राउंड. देयर वाज नो प्लेस टू रन ऑल्सो, वो पूरा खुला मैदान. तो यू जस्ट हिट द ग्राउंड एंड वहीं लेटे लेटे बिना कुछ देखे आप उस डायरेक्शन में जनरली फायर कर रहे हो. कुछ पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है. एनीवे, सो इतने में आई केम, मेरे को लगा जैसे somebody is, punched me in the back. अचानक कोई, आप यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग इन, कोई दोस्त आके पीठ पे ऐसे करके मार देता है, तो करके हवा निकल जाती है. सो वही थोड़ा और एम्पलीफाई कर दीजिए. सो वैसी फीलिंग लगी, तो मेरे को लगा कोई मोटा पत्थर आके मेरी पीठ पर गिरा होगा. इट डिडंट स्ट्राइक माय माइंड कि हम तो ओपन फील्ड में थे, ऊपर से कहाँ से आके गिरेगा पत्थर. एनीवे, तो फिर दे टू रियलाइज कि ये फौज काफी है चारों तरफ. तो दे जस्ट सिंपली, उन्होंने फायरिंग बंद की और चले गए. तो जब फायरिंग उन्होंने बंद की, हमारी फायरिंग भी सब ने एक एक मैगजीन तो निकाली दी होगी. एंड वो मैगजीन बदलने में टाइम लगता है. आई थिंक ऑल ऑफ अस, 5 6 of us, वी पुट ऑफ आवर मैगजीन. एंड इन दैट गैप दे ऑल्सो रन अवे. एंड एंड यू आर ऑल्सो स्कैर्ड. रात है, कुछ दिख नहीं रहा, अंधेरा है. मैं हिलूं, आवाज करूं, इफ आई मेक अ साउंड they might hear you, but I can't hear them. Then after lying down, everybody was lying down quiet. Then I took the name of the person next to me, so and so. जी साहब, ठीक है. हाँ. मैंने कहा अगले से चेक कर. तो ही टुक अनदर नेम. मैंने लेफ्ट वाले से चेक किया. सो वी वर 6 of us, 6 7 of us. सो वी चेक्ड. एनीवे, सो आई गॉट अप, उनको चेक किया, सब ठीक है ना, अपना हथियार एम्युनिशन सब चेक कर लो. यस, ओके. And I was wearing that thick coat parka. And I realized, my entire coat was wet absolutely. तो मेरे को बड़ी मनी मन शर्म आई कि यार, इस इनकाउंटर से आई गॉट सो स्कैर्ड दैट आई स्वेट सो मच कि पूरा मेरा कोट ही गीला हो गया. आई डू नॉट नो दैट आई हैव बीन शॉट टिल नाउ, एंड देयर वाज नो पेन. पीठ पे लगी थी मेरे ना. इट वेंट अलोंग द बैक. इट्स अ नाइस ब्यूटीफुल स्टार. सो व्हेन वी रीच्ड द लोकेशन, वहां लाइट नहीं थी, लाइट थी नहीं. एनीवे, लाइट नहीं थी तो जैकेट जुकेट उतारी और रखा. and देखा, my vest was also absolutely wet. So I took that also out and this thing, kept it. And I told somebody, यार जनरेटर तो चला दो, थोड़ा सा लाइट तो हो जाए. We just come back. This would be around 10:30 11 at night. And generator chala, I was going around my tasks, and then my buddy walked in. And he saw, and then he create no भागता हुआ बाहर चले गया. And then 7 8 people came and they peeped and they saw.
And then they said कि are you okay? So I said yeah, I'm okay. Why? So they said no, आपकी पीठ ठीक है? So I said क्या हुआ मेरी पीठ को? And then I looked in the mirror. एंड देन वो पिक्चरों में वो कॉमेडी वाला पिक्चर नहीं दिखाते कि अचानक देखते हो और एकदम हालत खराब हो जाती है. So it was something like that. It was looking very bad, but it was not very bad. It was okay. So there was a gash all along, about इतना लंबा गैश था. बुलेट जब जाती है तो पूरा ना फ्लैश फाड़ते हुए निकलती है. तो देयर वाज नो, इट डिड नॉट एंटर थ्रू एंड थ्रू करके, तो फ्लैश को फाड़ते हुए निकली. दैट्स अबाउट इट. अच्छा, मिलिटेंट कोई मारा नहीं था हमने, तो बड़ी शर्म आए. तो सीओ को बताने में भी शर्म आए. सो माय सीनियर जो से साहब जी इन्हों रिपोर्ट कर देने हैं, मैंने कहा रुक जाओ, अभी अभी नहीं रिपोर्ट. सो आई डेंट रिपोर्ट टू माय सीओ. So after some time, that other postmate of mine, he came. So so after coming, he came 2 3 hours later. तो कहता क्या हुआ, सुना तेरे को लगी है? अरे फाइन यार, थोड़ी सी लग गई है. तो he also saw. Then he told his CO. His CO was sitting with my CO. They both. And then till now CO doesn't know the extent. Yeah. तो सीओ से वहां से डंडा आ रहा है कि why haven't you told me? किसको लगी है? मैंने कहा सर मेरे को ही लगी है थोड़ी सी. तो अभी नाउ व्हाट, मैंने कहा विल सी इन द मॉर्निंग, आ जाएंगे सुबह, आई विल शो इट टू द डॉक्टर. फाइन. सो इन द मॉर्निंग वी केम, showed it to the doctor. Of course, डॉक्टर से डांट खाई. And then I was evacuated by road to Srinagar. It so happened कि अच्छा, doctor had given me those temporary stitches, whatever best he could do. The beauty is that there was no pain. Even in the morning, I don't know क्या था पीठ में, या तो नर्व्स कम होती हैं क्या, तो ज्यादा पेनफुल नहीं था वो. इवन व्हेन ही वाज स्टिचिंग इट, इट वाज नॉट वेरी पेनफुल. एंड उन दिनों वो लोकल एनेस्थीसिया वगैरह पता नहीं दिया भी होगा, आई डोंट रिमेम्बर, बट इट वाज नॉट पेनफुल, दैट मच आई रिमेम्बर. एनीवे, आई वाज गोइंग बाय रोड, एंड व्हेन आई रीच श्रीनगर 92 BH, वहां एक हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है. पता लगा कौन है, दैट सोही, माय कोर्समेट, माय फ्रेंड. सो ही लैंडेड, एंड he had got he went for another operation in the morning. He got shot through the chest, and he was unconscious when मेरे आंख के सामने अंदर आया. मैं तो ठीक ही था, तो मैं उसके पीछे पीछे चले गया. एनीवे, नाउ द डॉक्टर डिडंट फाइंड हिज ब्लड. उसका ब्लड ग्रुप पता नहीं, नॉर्मल B+ इज द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप. एनीवे, वहाँ 92 BH में सारा ब्लड में. तो दे वर लुकिंग अराउंड, B+ किसका है? तो ऐसे हाँ मेरा है. बोला, ठीक है. सो वहीं पर लिटा के गिव ब्लड टू हिम. एंड इन द मीन वाइल देन दे टुक हिम इनसाइड. एंड देन उसका रफा दफा करके व्हेन द सर्जन केम आउट, ही सेड हाँ तुम्हारा क्या है बेटे? तो एक लेफ्टिनेंट कर्नल अग्रवाल थे, वेरी वेरी नाइस पर्सन. सो आई सेड सर वो थोड़ी सी गोली लग गई थी तो वो दिखाना था. तो ही सेड अच्छा अच्छा चलो दिखाओ, कहाँ लगी है? तो ही थॉट कहीं उंगली उंगली में लगी होगी. सो व्हेन आई टुक ऑफ माय जैकेट, एंड देन ही सॉ, देन ही सेड यार तू तो अभी ब्लड दे रहा था. तो मैंने कहा हाँ. सो आई गॉट स्लैप्ड, टपैक करके एक थप्पड़ पड़ा मेरे. हम बच्चे ही थे यार, 23 24 साल के होंगे. तो कह रहा यू गॉट शॉट एंड यू जस्ट गिव ब्लड टू दैट गाय. मैंने कहा इज माय कोस्टमेट, माय कंपनी. तो आई गॉट शॉट यस्टरडे नाइट. तो मेरे, तो आई नो आई एम नॉट वेरी सीरियस, लेकिन कहता हु आर यू टू डिसाइड यू आर सीरियस और नॉट? एनीवे, बट लेटर ऑन ही बिकेम अ वेरी गुड फ्रेंड. फिर मेरे को अंदर ले गए, और शाम में जब आंख खुली तो सोई और मैं दोनों बगल बगल में थे. एंड देन वी वर शिफ्टेड आउट ऑफ द आईसीयू. बगल बगल में बेड थे. अच्छा, वो सरदार को जोक करने की आदत थी, तो वो कुछ ना कुछ बोले तो हंसी आए. जब हंसी आए तब फिर अब स्टिच, अब दर्द होती थी. तो जब दर्द होती थी तो फिर आई वुड टेल हिम यार हंसा मत. तो वो हंसाता था, दर्द होती थी, तो फिर मेरे को भी बदला लेना होता. फिर आई वुड टेल हिम अ जोक, मैं उसको हंसाता था, फिर उसका दर्द होती थी. तो दिस होल साइकिल कंटिन्यूड. एंड देन द डॉक्टर्स आल्सो रियलाइज, सो दे केप्ट अस. श्रीनगर ऑफिसर्स वार्ड जो है वो लंबा सा एक हॉल है, तो दे केप्ट अस एट ऑपोजिट एंड्स. करीब 25 30 मीटर दूर रखा हम दोनों को ना. लास्ट बेड दिस साइड एंड लास्ट बेड दैट साइड.
लेकिन वो वहां से जोक सुनाता था हंसाने के लिए, फिर मैं यहाँ से सुनाता था। सो गुड टाइम वी हैड. अमेजिंग सर, So मतलब that is how I got shot. And अभी द so एंटायर it was स्टोरी जैसे आपने नरेट करी, इतनी इजीली आपने नरेट करी पूरी स्टोरी। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट वाज के व्हेन यू सी योर फ्रेंड, योर कोर्समेट, कि उसको ज्यादा इंजरी हो गई है, इवन यू वर आल्सो इंजर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट यू केप्ट योरसेल्फ एट द बैक, यू डिसाइडेड टू गिव हिम द ब्लड। एंड दिस शोज के हमें लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरों के बारे में खुद से पहले सोचना चाहिए। सो ये जो सेल्फलेसनेस के लेसन्स होते हैं, आई थिंक फोर्सेस से ही हमें मिल सकते हैं। तो अमेजिंग सर, मतलब पूरा जो इंसिडेंट जितने प्यार से आपने नरेट किया, काफी नहीं, अच्छा लगा। अमेजिंग नहीं यार, मैं तो अपनी जान बचा रहा था। अगर कोर्स में पता लग जाता कि सोही मर गया और मैंने खून नहीं दिया, मैं तो कहीं किसी को शक्ल नहीं दिखा सकता था फिर। चलो ना, नहीं नहीं, लाइटर। हम तो सस्ते में छूट गए थे उस दिन। अमेजिंग। सो नाउ आई हैव नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। आप स्पेशल फोर्सेस के एक ऑपरेटिव रहे हैं, पैराशूट रेजिमेंट में आपने सर्व किया है, एंड आई थिंक इट्स एन ऑनर फॉर एवरी सोल्जर टू बी ए पार्ट ऑफ द स्पेशल फोर्सेस, और आपने इतने कोवर्ट फोर्स को ज्वाइन किया, अपने पूरे प्रोबेशन को क्लियर किया। सो आई जस्ट वांट टू नो अबाउट योर मोटिवेशन एंड योर जर्नी इन द प्रोबेशन, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि हम हमेशा सोचते हैं कि लेट्स हैव अ इजी वे आउट, थोड़ा इजी ऑप्शन को चूज करते हैं, बट यू चोज द हार्डर ऑप्शन। सो व्हाट वाज योर मोटिवेशन एंड समथिंग अबाउट योर जर्नी इन द प्रोबेशन, कि कैसे कैसे आपका प्रोबेशन रहा था फिर उस टाइम पर। Motivation, of course, you all, even before joining uh, before getting commission, you knew कि special forces, para commandos बोलते थे उन दिनों. Para commandos are the toughest of the lot. So, of course, हमारे we had two 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 courses who had two course mates who had already joined when we went for VIOS course. So they would tell us stories, and of course, you also feel motivated. Yeah, actually, right at the time of commissioning, when we joined the Punjab Regimental Center, that time also there was another coursemate of mine. He's now in 10 para brigadier. हम ज्वाइन करते ही वहां पर जब वेलकम हुआ तो उसने बोल दिया था कि मैं तो पैराशूट रेजिमेंट जान रहा हूँ. मैंने कहा अच्छा ये जाएगा तो मैं भी चलता हूँ. So I said even I'm going to join. So right from that time we were to join. Yeah. So the probation was a scary thing, and you had to prepare well. It is tough. It is tough. Not only mentally, not only physically. It is very tough mentally also. You really पूरी दुनिया उस समय लगी होती है आपको ब्रेक करने के लिए. You know, you'll be sleep deprived. You'll be dead tired. You'll be physically, of course, you'll be tired, and officers especially so because uh, once you do the entire routine which all the jawans do, and after that you are given some extra task as an officer. Uh, Otherwise, there is no difference between you and the jawans who are doing the probation. So every night you would get, and all these tasks come to you at night after the whole day is over. 11 11:30 बजे. A simple task like writing a book review, you know. So they'll tell you, okay, book review 2000 words tomorrow morning. और 2000 वर्ड लिखने में टाइम लगता है. So a night is gone, and tomorrow morning again, the whole rigmarole starts again. So various things are there. You're kept hungry. You're so probation is also good fun. Now, looking back, उस समय तो उस समय तो okay, when I was leaving 23 Punjab for the probation, so my CO was telling me, "मत जा यार, don't go." I know people. I have friends in the para, and I know you don't have it in you. You'll be coming back. I know it. So it's better that you don't go now only. You just sign, and I will get it cancelled. But if you go and come back, then I'll be waiting for you here, and then God help you. लेकिन उस समय तो था कि नहीं नहीं सर, मैं तो आई विल गो फाइन. सो आई वेंट एंड ज्वाइंड. एंड जब भी वो मोमेंट आता था ना, व्हेन यू फेल्ट लाइक गिविंग अप, कि यार बहुत हो गया यार,
एंड देन वो मेरे सीईओ की शक्ल आती थी मेरी आंखों के सामने, आई एम वेटिंग फॉर यू, ऐसे ना कर ले इसको। So yeah, so and then there were two, three other officers. We had each other for company. आशीष अग्रवाल था, योगेश शर्मा था, and there was another coursemate of mine, uh, Heer. So we could somehow, just about in the nick of this thing, we made it. One thing I Yeah, really liked probation was about tough, but it was your good. one thing I really liked about your story is कि ऐसा नहीं है कि हमें लाइफ में हर एक चीज को पहले से ही प्लान करके चलना पड़ेगा. We have got to be flexible. So just the way you told me कि अच्छा दोस्त ने बोला मैं जा रहा हूँ, मैं कहा चलो हम भी चल लेते हैं. एंड इट टर्न्ड आउट एंटायरली इनटू अ डिफरेंट थिंग. हो सकता है कि अगर आप वो मूड ना बनाते या फ्रेंड को देखकर, तो शायद आप ब्रिगेडियर, जैसे ब्रिगेडियर की रैंक पहुंचना, इट्स अ वेरी बिग थिंग. सो शायद वो चीज़ नहीं हो पाती. सो लाइफ में फ्लेक्सिबल होना भी ज़रूरी है. हर चीज़ को इतना रिजिड होके एक प्री प्लान वे में करना है, वो भी राइट अप्रोच नहीं होती है. ऑल द प्लानिंग इज ऑलवेज गुड, बट कई बार लाइफ में यू गॉट टू बी फ्लेक्सिबल एंड गो विद द फ्लो. अच्छा सब चल रहा है, चलो करके देखते हैं. आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट योर प्रोबेशन. कोई एक स्पेसिफिक इंसिडेंट आपका जो आपको ऐसा लगा होगा कि बस यार यहाँ पे तो मैं छोड़ ही देता हूँ, अब जो शक्ल दिख रही है मेरे सीईओ की मैं झेल लूंगा जाके, बट ये नहीं हो पाएगा मुझसे. सो योर ब्रेक पॉइंट के कहाँ पे आपको कुछ ऐसा लगा होगा ये तो दिस इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोबेशन.